Hi बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द स्टडी 10 चैनल एंड इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। सो ये वीडियो पहली बार आप इस चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर CBSE has declared two big updates for the new sessions and in the future also. So let's see what are the big two updates. So till now, in the result of class 10th and 12th, the mark sheet was looking like this. It is telling us the marks system as well as the positional grading system. But CBSE has declared a new ones from this session that there will be only grading system from now onwards. There is no marking system. Suppose if a student scores between 91 to 100, then he will be able to score like A1, A2 like this. And student who will be scoring from 85 to 90, they will be scoring B1, and 81 to 85 B2 like this they will be scoring. So only positional grading system will be seen in the result for 2024 to 25 batch, and there is no marking system as seen in the previous schedules or previous exams. So this is the first big update, and the second update is CBSE board exams to be conducted twice a year from 2024 to 25. ये जो टॉपिक है आप सबने देखा होगा, पर इसमें क्लैरिटी किन्हीं दो बच्चों को आया होगा. So watch the video till end to understand what it is. So multiple boards format to debut with 2024-25 batch of class 10 and 12th. So let's see. Just we have to read the first paragraph and we will be understanding it. Students who commence their class 10 and 12th from the 2024-25 academic session will be the first batch to get the opportunity to sit for the multiple board format. तो यहाँ पर 2 times बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे 2024-25 बैच. ये पहली बैच है और फ्यूचर में ऐसे ही होगा. CBSE ने डिक्लेयर किया था. मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे कि कोविड टाइम में टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, एक टर्म में मल्टीपल चॉइस और दूसरे टर्म में थियोरी बेस्ड, ऐसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा. जैसे 2024 रीसेंट एग्ज़ाम्स में एक ही बार एग्ज़ाम हुआ था और उसमें मल्टीपल चॉइस भी थे और थियोरी भी था. द होल 2 थिंग्स आर कवर्ड इन 1 एग्ज़ाम ओनली. तो वैसे ही 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है. और ये अपॉर्चुनिटी पहली बार दे रहे हैं कौन से बैच? 2024-25 बैच. So congratulations to the 2024-25 batch who are seeing this video and who are happy with this 2 big updates. Please comment in the comment section and subscribe to the channel and also share it to your friends to know the latest updates. So till then, bye bye and stay tuned for the next video. Thank you.